Good evening, students. We are back with last revisionary lecture for CA Inter FM. Today, we would be revising the chapter of working capital management. आज हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूरा चैप्टर क्विक ब्रश अप करेंगे. So first of all, the broad category of the chapter is called as working capital management. Let me just share my screen with you all. Working capital management. Can you all see my screen? Wait, let me stop and share it again. Can everyone see my screen? It is visible, right? Okay. So, working capital management. Working capital के components क्या क्या होते हैं? So it is nothing but it has component of current assets, component of current liability. Current assets में the general line items of current assets are stock, receivables, cash and bank balance. So these three are the general line items of current asset. ज्यादातर सब बिजनेस में आपको स्टॉक दिखेगा, डेटर्स दिखेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा. And on the liability, current liability side, we have payables. So ideally, working capital management is nothing but managing your stock, managing your receivables, managing your cash and bank, managing your payables. Okay? So this chapter is broadly subcategorized into 4 parts: inventory management, receivables management, cash and treasury management, payables management. Now in your FM syllabus, you already know that we don't have inventory management in FM. Why? Because the entire concept, entire inventory management concept is covered in your costing paper. So they have just deleted from FM syllabus. Now, so today we would be revising about receivables management, cash and bank balance management, payables management, and how to estimate the working capital. ठीक है? So आज का सेशन 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा. How to estimate the working capital, how to estimate the working capital means calculate कैसे होता है, and then managing the receivables, payable and cash. Now let's start with topic 1, estimation of working capital. You have already learned this, so we will not discuss it very comprehensively. We will just quickly brush up all the concepts that we have learned in this chapter. अच्छा, इस चैप्टर में हमने पहले तो ये सीखा था कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं. इट इज सीए माइनस सीएल. बट होता क्या है? इट इज नथिंग बट द फंड्स दैट यू नीड टू रन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस. करेक्ट? डेली बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए, दैट पैसा इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल. If you recollect, I gave a small example. Let's say you wanted to start a manufacturing business. So for manufacturing business, you will need a land. Yes or no? On which you will set up the entire factory. So इस land में हमने पूरी factory लगा दी. We constructed the entire factory. अब factory building के अंदर we will
set the machines, all the machineries. Yes or no? To manage smooth functioning of factory, we have created an office space over here. All the machines are internally linked through electrical fittings, through electrical installations. Now tell me, बस ये सब कर दिया मैंने तो क्या मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? Just by taking up the factory land, setting up the factory building, dedicating a space for office, electrical installations, क्या मेरा मेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? No, you need additional funds for smooth running of this fixed asset. And that additional fund is nothing but working capital. ये मशीन में डालने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए. अच्छा, ये मशीन में वर्क करने के लिए लेबर तो चाहिए. So all that is daily business operating cost. Are you following? And that fund needed to run day-to-day business operation is called working capital. So अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया था कि fixed assets can never work on its own. For smooth running of fixed asset, we need additional capital in the form of working capital. Are you following, everyone? So this was the meaning of working capital. And how to estimate working capital? We know that it is nothing but current assets minus current liabilities. Excess of current assets over current liabilities. ठीक है? फिर इस चैप्टर में हमने एक फॉर्मेट सीखा था कि एस्टिमेशन इज CA minus CL, but there is an organized way of finding working capital. So हमने फॉर्मेट सीखा था. What was the format? Let's just quickly revise the format of working capital. हम नंबर 1 लिखते थे करंट असेट्स, उसमें से we used to less current liabilities. करंट असेट में नंबर 1 स्टॉक. अच्छा, before understanding, before revising the format, there were some general standard assumptions of this chapter. What were the general assumptions of this chapter? Can anyone try to write down on the chat box? What were the 3 general assumptions? Number 1, general assumption number 1 was we would be estimating working capital for that business organization जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में. ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस है आपके आरटीपी, एमटीपी मॉड्यूल, सब क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंडस्ट्री. ठीक है? सो द वेरी सिंपल लॉजिक इज दैट इफ यू नो how to calculate working capital for manufacturing industry, then trading and service is not a tough task for you all. Out of the 3 industries, manufacturing, trading, service, the most complicated is manufacturing industry. So उसका आपने estimation करना सीख लिया, so बाकी सब is little simplified for you all. ठीक है? So all the questions will be on manufacturing business industries. ठीक है? Second was all activities accrue evenly throughout the year unless otherwise specified. Assumption number 1, estimation will be for manufacturing businesses. Assumption number 2, all activities accrue evenly throughout the year. Accrue evenly throughout the year means if sales for entire year is 12 lakh, तो जैन में 1 लाख का सेल हुआ होगा, फेब में 1 लाख का हुआ होगा, अगस्त में 1 लाख का हुआ होगा, दिसंबर में 1 लाख का हुआ होगा. ठीक है? Likewise for the stock as well. If all activities accrue evenly throughout the year means stock in the month of Jan would be same as stock in the month of May. Likewise would be same as stock in the month of December. ठीक है? But unless otherwise specified. This was assumption number 2. Assumption number 3 was
हम जो एस्टिमेशन, हम जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट ढूंढते हैं ना, दैट इज फॉर द एंटायर कमिंग ईयर रिक्वायर्ड। एंटायर कमिंग ईयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड मीन्स आने वाले साल में हमें जो वर्किंग कैपिटल लगेगा, पूरे साल का हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करते थे। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल वाज एस्टिमेटेड फॉर द एंटायर ईयर, फॉर एंटायर और फॉर द होल ईयर। These were three standard assumptions unless otherwise specified of this chapter. ठीक है, so moving with that, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है हम, तो कहना है स्टॉक वुड बी ऑफ थ्री टाइप्स, RM, WIP and FG. Number two was debtors, then cash bank balance, number D other current assets। ठीक है, अदर करंट असेट्स में सारे प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह आ जाते थे, एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटी में वेरी इंपॉर्टेंट, पेबल्स, क्रेडिटर्स, बी अदर करंट लायबिलिटीज लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक standard format to calculate or to not to calculate but to estimate working capital required. So current assets में से हम current liability minus करते हैं, तो कहना है इसे the resultant figure will be called as excess of current asset over current liability. इसमें if safety margin is given, then we will add safety margin, and after adding safety margin we will get our working capital required. So this was the basic format of calculating or estimating working capital needs. Now tell me what was the formula to calculate RM stock? RM stock calculate करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लगाते थे? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन द चैट बॉक्स। RM कंजम्पशन अपॉन एवरेज RM. Okay, can you just elaborate this formula? In simple terms, it was nothing but raw material consumption into RM holding period divided by 12, 365, 52. ठीक है, so let's say your raw material holding period or raw material storage period is 2 months and your annual consumption of raw material is 12 lakhs. So raw material stock, raw material holding period of 2 months ideally means पूरे साल का जो कंजम्पशन है ना 12 लाख, proportionate to 2 months, proportionate to annual consumption of 2 months is my RM stock. This is how we used to interpret. पूरे साल का कंजम्पशन is 12 लाख, but proportionate or equivalent to 2 months of this consumption is in RM का stock, is RM का stock. This is how we used to calculate RMC. ठीक है, RMS, raw material stock. बोला any queries? Any doubts? Example, if raw material consumption annually is rupees 12 lakhs and your raw material storage period is given 2 months. So what does this raw material storage period of 2 months means? It means
proportionate to 2 months of this annual consumption is my RM stock. Are you following? So 12 lakh into 2 divided by 12. So 2 lakh would be the value of your RM stock. ठीक है. रॉ मटेरियल स्टॉक आपके गोडाउन में 2 महीने के लिए पड़ा रहता है, बट उसकी कुछ वैल्यू होगी. वैल्यू I know storage period is 2 months. So raw material before entering into the production will be in warehouse for 2 months. But उसकी कुछ वैल्यू तो होगी. What is that value? So that value is equivalent to 2 months of this consumption is my RM stock. ठीक है. Likewise WIP. So work in progress में there would be RM in WIP, wages in WIP and overheads in WIP. ठीक है. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं WIP होल्डिंग पीरियड से. डिवाइड बाय 12, 365, 52. डिवाइड बाय 12, 365, 52. डिवाइड बाय 12, 365, 52. And since WIP is unfinished goods, it is something less than finished goods but above raw material. So we used to multiply it with percentage completion. ठीक है. Percentage completion means रॉ मटेरियल WIP में कितना परसेंट कंप्लीट है, कितना परसेंट डाला हुआ है, दैट इज परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रॉ मटेरियल. लेबर ने प्रोसेस में कितना काम कर दिया, दैट इज परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ लेबर. ठीक है. So what was the standard percentage completion if no information, if no specific percentage was given in the question? Standard assumption क्या होता था percentage completion का? Yes, 100% for material, 50% for labor and overheads. It means 100% raw material required is thrown into the process. वो process में डाल दिया है. Finished goods बनाने के लिए जितने भी raw materials चाहिए वो सारे लगा दिए. बट लेबर और ओवरहेड्स ने अपना 50% काम किया है. दिस वॉज द स्टैंडर्ड अजम्पशन ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन इन केस ऑफ WIP. ठीक है. फिर हम कैलकुलेट करते थे FG स्टॉक. सो वी नो दैट FG इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो COGS into FG होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12, 365, 52. ठीक है everyone. So this was how stock of RM, stock of WIP and stock of FG was calculated. Now debtors. How to calculate debtors? Can I say debtors are based on, जैसे raw material is based on raw material consumption, WIP is based on cost of production. रॉ मटेरियल प्लस वेजेस एंड ओवरहेड्स का टोटल करेंगे तो इट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. FG इज बेस्ड ऑन COGS. वैसे डेटर्स इज बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल्स. ठीक है. क्रेडिट सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 12, 365, 52. दिस वाज हाउ डेटर्स वर कैलकुलेटेड. बट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट comes into the picture over here. Ideally debtors are valued on sales. ठीक है. But what is working capital in layman terms? Can I say it is nothing but amount blocked in current assets? Means amount stock में कितना block हुआ है, debtors में कितना block हुआ है. Correct. So ideally can I say debtors if it is valued on sales then उसमें profit element भी include हुआ होगा. Yes or no? But प्रॉफिट में कभी पैसा ब्लॉक नहीं होता है. प्रॉफिट इज समथिंग ओवर एंड अबाउ कॉस्ट. आर यू गेटिंग इट? अमाउंट ब्लॉक्ड इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट. इट इज नॉट ऑन प्रॉफिट. प्रॉफिट इज समथिंग ओवर एंड अबाउ कॉस्ट. सो यू कैन नॉट से मेरा पैसा ब्लॉक हो गया है प्रॉफिट में. नो. प्रॉफिट आपके जेब से क्या गया है, दैट इज द अमाउंट ब्लॉक. आपके जेब से तो कॉस्ट गया है. सो दैट इज योर अमाउंट ब्लॉक्ड इन द बिजनेस. सो डेटर्स कैन ऑल्सो बी वैल्यूड ऑन cost of sales instead of credit sales. So you remove the element of profit to value debtors. ठीक है.
into ACP 12, 365, 52. Understood, everyone? So to estimate working capital, can I say ideally there are two methods? One is cash cost method or cash cost basis. One was total basis. If you are following total basis of working capital estimation, then you value debtors on credit sales. But if you are following cash cost basis, which is ideally more logical, more practical, you should value debtors on cost of sales. Because ideally the actual amount blocked is not on sales. Actual amount blocked is on cost of sales. Are you following? And this is one point if you follow cash cost basis. Another important point is depreciation. If you are following cash cost basis of estimation, then you need to remove depreciation from your overheads. ठीक है? So overheads में से नॉन कैश एक्सपेंस सारे निकल जाएंगे बिकॉज अगेन डेप्रिसिएशन हम हमारे जेब से नहीं भरते. So there is no cash outflow. Understood? So if you are following cash cost basis, ideally हमें दो चीजों में ध्यान रखना है. One is you remove the effect of depreciation from manufacturing overheads, production overheads. Number two, debtors to be valued on cost of sales. ठीक है? Cash bank balance was given in the question, is always given in the question. Other current asset में prepaid expense. ठीक है? So this was Acha, the total of current asset is called as gross working capital. I hope you remember this. The total of all the current asset was termed as gross working capital. जैसे gross total income होता था, फिर deduction लेते थे, and you get net total income or net taxable income. वैसे ही gross working capital, फिर deduction आएंगे in the form of current liability and you get excess of current asset over current liability. Is everyone following? Yes, in total approach, we have to take profit and depreciation both. Okay? Creditors. Can I say creditors is based on credit purchases? So credit purchases into average payment period divide by 12, 365, 52. ठीक है? And outstanding expense कैसे ढूंढते थे? तो respective expense into outstanding period divide by 12, 365, 52. So if outstanding expense is admin expense, तो यहाँ पे हम admin expense का total लेते थे into outstanding period divide by 12, 365, 52. Are you following, everyone? So this was the broad insights about the format of estimation of working capital. अच्छा, अब ये सारे वैल्यूज आरएमसी है, वेजेस है, ओवरहेड्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है. From which source document you will get all these values? So for that, if you recollect, we used to prepare cost statement. Cost statement was something very similar to your cost sheet, but in a compiled version, in a compressed version. ठीक है? Because FM में हमें पूरा डिटेल कॉस्ट शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है. So we used to prepare cost sheet, yes, cost statement. So the source document for estimation of working capital was our cost statement. Cost statement start होता था raw material consumption से. फिर डायरेक्ट वेजेस ऐड होता था. फिर हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करते थे. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में depreciation related to production and other cash manufacturing overheads. The total of these three costs was nothing but cost of production, COGS,
कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है. वाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COGS, सॉरी नॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड COGS. फिर इसके बाद हम ऐड करते थे एडमिन एक्सपेंस, selling and distribution expense which are not related to production. हाँ, if admin expense is related to production तो उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में लेना है. बट इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इफ इट इज जनरल एडमिन एक्सपेंस, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करेंगे. ठीक है. सो इफ वी ऐड एडमिन सेलिंग एक्सपेंस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वी यूज टू गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट चढ़ा के वी गेट सेल्स अमाउंट. ठीक है. नाउ टेल मी what all will be included and what all will be excluded if we follow total basis, cash cost basis. ठीक है. So if we follow total basis, cash cost basis, can I say raw material consumption दोनों में आएगा? बिकॉज आज नहीं तो कल रॉ मटेरियल का कॉस्ट हमें कैश से ही पेमेंट करना होगा. कैश मीन्स बैंक ऑल्सो. Direct wages, again it will be included, either you follow total basis or cash cost basis. But now as far as manufacturing overheads are concerned, depreciation will be included if you follow total basis, but no depreciation if you follow cash cost basis. Cash manufacturing overheads has to be included in both the cases. ठीक है. एडमिन अगेन हैज टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द केसेस. सेलिंग अगेन आज नहीं तो कल हम इसका पेमेंट कैश या बैंक से करने वाले हैं, सो इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द मेथड्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स. प्रॉफिट if you follow total basis then you include profit as well to value debtors, but if you follow cash cost basis you don't include the element of profit to value your debtors. ठीक है. and sales will be considered if you follow total basis. cash cost basis करते हो तो sales का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है. followed. so again we not quickly but we revised again comprehensively the format of estimation of working capital. and estimation of working capital में जो हमें values चाहिए वो values cost statement से आता था. so cost statement का this was the format, compressed version of your cost sheet. Yeah, if admin is related to production तो वो यहाँ follow होगा, other cash manufacturing overheads में. So in that case admin will be part of your manufacturing overheads. Okay. So this was about estimation of working capital, how to prepare the format, from which source document you will get all the values for your format. Clear till here? So this was learning objective number 1. अब इसी चैप्टर में there was one more learning objective called working capital operating cycle. Yes or no? There was one more learning objective in estimation of working capital. क्या था? Working capital operating cycle. Students, what have you learned? What have you understood by this term, working capital operating cycle? Tell me. वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या, पहले वो समझाओ. Don't give me complicated definition, but try to give me simple explanation that even layman can understand. Anyone? You can write your answer on the chat box. Huh?
What did you understand by the concept of working capital operating cycle? No one recollects, or you have not revised this chapter, this concept. How convert cash bank into system expense to sell collection? Eh? I'm not able to understand what you have written. But anyways, let me tell you, it is nothing but it is a simple process. Process of what? It is a process of converting, yes, cash to cash. It is a process of converting cash back into cash. A simple process. एक जेब से कैश आज जा रहा है, वापस यही कैश दूसरे जेब में कितने टाइम में आएगा? दैट इज ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. So working capital operating cycle means conversion of cash back into cash. ठीक है? And the time taken to complete this entire process. The time taken to complete this entire process. आज एक जेब से कैश गया, वापस यही कैश घूमते 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 कितने टाइम में मेरे जेब में वापस आएगा? दैट इज ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. ठीक है? दिस वाज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल. Now, what do you mean by conversion of cash back into cash? So there is cash number one, cash number two. So by cash number one, what am I trying to mean? This is the cash that you pay to buy raw materials. ठीक है? So this is the cash that you pay to your suppliers. And cash number two means cash you receive from your customers, you receive from your debtors. So this is the whole cycle ना. आज मैं जाऊंगा खरीदने raw materials, I will pay some cash to my supplier. So that cash will be now in the form of raw materials, because आज एक जेब से कैश दिया, दूसरे जेब में raw materials आया. So my cash is now converted into raw material form. Are you following? So आज day one पे cash I paid to my supplier, and supplier ने cash के बदले में मुझे क्या दिया? Raw materials दिया. So my cash has taken the form of raw material. Now जैसे ही मैं raw material खरीदूंगा, तुरंत मैं production में नहीं डालूंगा. I need to store it for some period of time. ठीक है? So I will hold it for some period of time. So let's say I hold my RM for 15 days before entering into the production or before issuing into the production. So visualize, आज मैंने जेब से कैश भरा है. To whom? To my supplier. उसने कैश के बदले में मुझे रॉ मटेरियल दिया. So वो visualize, मेरे हाथ में रॉ मटेरियल्स आए, but I'm not entering into the machine directly. I am taking this raw material and storing it in warehouse for 15 days. So can I say 15 days तक तो मुझे ये कैश वापस नहीं मिलने वाला है? क्लियर दिख रहा है. ठीक है? At least for 15 days, that cash is blocked in raw material. ठीक है? After 15 days, I issue this. I throw this raw material into the machine. So can I say machine process production will also take some time? So let's say our WIP holding period or the processing time is 10 days. Oh, so पहले 15 दिन cash was in the form of raw material, but अब और 10 दिन it has taken the form of WIP, work in process. So are you able to visualize cash अलग अलग रूप धारण कर रहा है? पहले रॉ मटेरियल के रूप में था, अब उसने कौन सा रौद्र रूप कौन सा दिखाया? WIP का रूप दिखा दिया फॉर 10 days. ठीक है? सो माय कैश इज ब्लॉक्ड, और इन अदर वर्ड्स इट हैज टेकन अ फॉर्म ऑफ WIP होल्डिंग पीरियड फॉर अनदर 10 days. फिर WIP से कन्वर्ट होके FG बनेगा.
बट स्टूडेंट्स जैसे ही वो मशीन से एफजी बाहर निकलेगा, वैसे ही फैक्ट्री में कस्टमर की लाइन नहीं लगी होगी, ओ योर प्रोडक्शन इज रेडी, जस्ट गिव अस द एफजी. नो. So before selling these finished goods, I need to store it in my godown. Are you following? Marketing team जाएगी मार्केट में, कस्टमर्स लाएगी, ऑर्डर्स लाएगी, फिर ये एफजी सेल्स में कन्वर्ट होगा. बट टिल दैट टाइम आई नीड टू स्टोर इट इन वेयर हाउस. सो अगेन देयर वुड बी सम एफजी होल्डिंग पीरियड. And let's say before getting converted to sales, my FG holding period is 15 days. So can I say जो day 1 पे मैंने कैश भरा था टू माय सप्लायर, वो 15 दिन तक रॉ मटेरियल के फॉर्म में था, फिर और 10 दिन के लिए वो WIP के रूप में था, और 15 दिन के लिए वो FG के रूप में है. ठीक है. सो 15 + 10 + 15, 40 days तक तो आई एम वेरी श्योर कि माई कैश इज ब्लॉक. इट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बैक, not getting converted back into cash at least till 40 days. Following. फिर sales से can I say after 15 days I will sell it to my customer, but again customer will not make the payment on the spot. As a market practice he will ask for some credit period. ठीक है. So that is debtors collection period. सेल हो गया आज, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर होल्डिंग एफजी फॉर 15 डेज मैंने गुड्स सेल कर दिया, बट उसी दिन पैसे नहीं मिल रहे. पैसे इज गेटिंग रिसीव्ड आफ्टर लेट्स से 30 डेज. आर यू फॉलोइंग? सो क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर इज 30 डेज. सो 40 + 30 days, after 70 days I am getting my cash that I paid on the first day. Are you following everyone? But in my current example, I presumed कि मैंने जो रॉ मटेरियल खरीदा है ना वो कैश बेसिस पे खरीदा है, मींस इट इज अ कैश परचेस. बट कैन आई से जैसे मैं मेरे कस्टमर को क्रेडिट देता हूं, वैसे आई एम कस्टमर ऑफ समवन, so my supplier would also be granting me some credit. Yes or no? Are you following? So that credit period given by supplier to me would be subtracted from the above holding periods. ठीक है. So creditors payment period. So let's say my supplier grants me credit of 20 days. So day 1 पे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, बट उसका पेमेंट मैं 20 दिन बाद करूंगा. सो कहने से मेरा कैश तो डे 1 से नहीं, डे 20th पे आउटफ्लो हो रहा है कैश का. Are you following everyone? So that's why we subtract this creditors payment period from all the above holding period. Are you following? Day 1 पे रॉ मटेरियल आ गया, बट उसका पेमेंट 20 दिन बाद हो रहा है. Are you following? So मेरे जेब से पैसा 20 दिन बाद हो रहा है, not from day 1. So that's why we subtract this 20 days from the above holding periods. So इसमें यहाँ पे मुझे -20 days करना पड़ेगा, and my effective वर्किंग कैपिटल ड्यूरेशन, वर्किंग कैपिटल साइकिल का ड्यूरेशन इज 40 + 30 70 -20 50 days. So it means, now what does this 50 day means? It means my cash is getting blocked for 50 days. ठीक है. और इन अदर वर्ड्स, आज जो जेब से पैसा गया है वही पैसा वापस विद प्रॉफिट विल कम टू मी आफ्टर 50 days. ठीक है. आज एक जेब से पैसा गया, दूसरे जेब में वापस वही पैसा विद प्रॉफिट 50 दिन बाद आएगा. दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट. सो कैन आई से टिल 50 days वी नीड टू अरेंज द फंड्स. यस और नो? So working capital cycle is for 50 days. So if you are able to arrange the funds for this 50 days, your job is done. Your business will run smoothly. Why? Because 50 दिन तक पैसे ब्लॉक हो रहे हैं. So उतने दिन तक आप पैसे अरेंज कर लो. And once amount is arranged for this 50 days, then cycle will repeat and repeat and repeat till the business exists. ठीक है. So 50 दिन बाद मुझे डेटर से पैसा मिलेगा, वही पैसे से वापस मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा,
रॉ मटेरियल से WIP, FG, debtors, again cash received, again raw material, and this cycle will repeat on and on and on and on. So your task as a business person is just to arrange funds for this 50 days cycle. एक बार ये पैसा अरेंज हो गया, then your cycle will be smooth till your business exists. Understood the concept of working capital operating cycle, everyone? And if this entire explanation, if I want to present it in a graphical form, then it was something like this. See, कैश से मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, रॉ मटेरियल जाएगा WIP में, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो FG का रूप लेगा. FG I will sell it to my customers, and that customers will pay the cash to me. So this is the entire graphical cyclical representation of working capital operating cycle, and this cycle goes on and on and on till your business exists. हाँ, business खत्म हो जाएगा, then this cycle will also end. Are you following, everyone? This was all about working capital operating cycle. ठीक है? Rolling of cash, perfect. Sir, if nothing written, whether administration related to production or not. If nothing is written, then administration is general admin, not related to production. But if still you want to include it in manufacturing or production overhead, then write a note below. Ki I have considered admin expenses, production overheads. Alternatively, it can also be taken as non-production overhead. ठीक है? But ideally it is non-production. It is assumed to be general admin, not related to production. But still, अगर आपको ये फॉलो नहीं करना है, अपना ही करना है, then you just mention them. No worries in that. Okay, so this was working capital operating cycle. So if I ask you the formula to calculate duration of operating cycle, तो formula क्या बनेगी? Can I say it is nothing but RM holding period plus WIP holding period plus FG holding period plus average collection period less average payment period. Are you following? So this is the net duration of operating cycle. जो हमारे एग्जाम्पल में 50 days आया था ना, that was nothing but net duration of operating cycle. अच्छा, raw material holding period, WIP holding period, FG holding period and ACP, ये सबका टोटल को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. So in our case, in our above example, gross duration was 70 days. Sum of holding period of current assets. उसमें से हम क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड माइनस कर देते थे, माइनस करते हैं तो वी गेट नेट ड्यूरेशन. ठीक है? सो ग्रॉस ड्यूरेशन माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड, वी गेट नेट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. सो रीड क्वेश्चन केयरफुली कि उसमें ग्रॉस ड्यूरेशन पूछा है या नेट ड्यूरेशन पूछा है. अच्छा, सिर्फ ड्यूरेशन वर्ड लिखा हो तो इट इज ऑलवेज नेट ड्यूरेशन. ठीक है? क्लियर? सो दिस वाज सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव in the chapter estimation of working capital. Now third learning objective in the same chapter was कि अब हमने estimate तो कर लिया कि working capital, let's say we need 20 lakh rupees. How will we arrange this 20 lakh rupees? What are the different sources of finance? Whether we should go for long-term finance, long-term sources ki short-term sources. So third objective of this chapter was learning about financing of working capital. कि आपने एस्टिमेट तो कर लिया कि आने वाले साल में 20 लाख वर्किंग कैपिटल इज नीडेड और वर्किंग कैपिटल फॉर 50 days is needed. But how will you arrange that capital?
क्या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज से करना चाहिए? सो फॉर दैट वी हैड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें हमने ये सीखा था कि पहले वर्किंग कैपिटल इज आइडियली categorized is broadly categorized into two types. One is permanent working capital and one is temporary working capital. Can anyone explain or write in the chat box what do you mean by, what do you understand by permanent working capital and temporary working capital? बोलो, परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता था, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या होता था, फिर हम देखेंगे कि ये वर्किंग कैपिटल कौन से सोर्सेज से हम रेस करेंगे। यस, परमानेंट इज दैट वर्किंग कैपिटल required at all times in the business. At any point in time, this amount will be needed for smooth running of your business. So if you recollect, I gave the example of ice cream shop. Let's say you are running a business of ice cream parlor. ठीक है? So 12 round the year you are running this business. So for entire 12 months there would be some amount of working capital that you will need at all the times. That is permanent working capital. But जब समर सीजन आती है तब कहना है से आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा आपको लगेगा। वाई? बिकॉज समर सीजन में हमें ज्यादा स्टॉक रखेंगे आइसक्रीम का। आर यू फॉलोइंग? एंड ड्यू टू कस्टमर रश वी माइट एम्प्लॉय one or more person additionally. So during seasonal time, we need some extra working capital for smooth running of business. That is temporary working capital. ठीक है? So ideally, permanent working capital should be raised from long-term sources. You can raise this working capital from long-term sources because you need this permanently in your business. But temporary working capital is needed for short period of time. So you can raise it through short-term sources. And if you want to represent this in graphical form, it was something like this. Permanent working capital was also called as fixed working capital. And temporary working capital was also termed as fluctuating working capital, depending on the season. जैसे jewelry business. So round the year, you would need some amount of working capital round the year. But जब दिवाली time आता है, कहना ऐसे jewelry business booms up because of high demand during Diwali. So during Diwali season, they need to keep more stock of jewelry. They might hire more employees during that time. So that is temporary working capital, only needed during Diwali season. Are you following, everyone? Understood? So this was about a short insights about financing of working capital. ठीक है? Now let's move to receivables management. फिर लास्ट में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे to the extent time permits. So this is learning objective for receivables management. सबसे पहले तो this is managing your debtors. किसको मैनेज करना है? डेटर्स, या रिसीवेबल्स बोलो या डेटर्स बोलो या कस्टमर्स बोलो, इट इज वन एंड द सेम. सो कहना है ऐसे डेटर्स का बर्थ इन द एंटायर एफएम वर्ल्ड, ये फाइनेंस यूनिवर्स में डेटर्स का बर्थ कब होगा? जब क्रेडिट सेल्स होगा तभी होगा. यस और नो? इफ देयर इज नो क्रेडिट सेल्स देन देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. क्रेडिट सेल्स ही नहीं है तो डेटर्स नहीं है, डेटर्स नहीं है तो किसको मैनेज करोगे? सो फर्स्ट
thing, a very primary thing was receivables management will come into picture only when there are credit sales. ठीक है, फिर हमने ये सीखा था कि क्रेडिट सेल्स के कुछ फायदे हैं, कुछ बेनिफिट्स है, कुछ नुकसान है. There are some benefits of credit sales, there are some नुकसान, or you can say risk or cost of credit sales. So just visualize, there is one company who is generating sales entirely through cash, and there is another company who is giving credit to its customers. बोलो सेल्स किसका ज्यादा होगा, टर्नओवर किसका ज्यादा होगा? जिस कंपनी, जो कंपनी क्रेडिट दे रही है उसका टर्नओवर ज्यादा होगा. सो कैन आई से दिस इज वन ऑफ द प्राइम बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट सेल्स. इफ यू गिव क्रेडिट टू योर कस्टमर्स, ज्यादा कस्टमर्स आपके कंपनी से गुड्स खरीदेंगे. ठीक है, सो क्रेडिट सेल का बेनिफिट वॉज इट रिजल्ट्स इनटू हायर टर्नओवर, एंड हायर टर्नओवर मींस कैन आई से इन टर्न हायर प्रॉफिट. So benefit of credit sale was it created increase in turnover, and increase in turnover means in turn आपका profit बढ़ जाएगा. But ये profit मुफ्त में नहीं आ रहा, it is coming with some cost. Visualize, credit sales है and एक कंपनी है जो कैश सेल्स कर रही है. तो जो कंपनी क्रेडिट सेल्स करती है, कैन आई से उस कंपनी को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेट करना पड़ेगा. उस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? रेगुलरली फॉलोइंग द कस्टमर्स फॉर पेमेंट, रेगुलरली रिमाइंडिंग देम थ्रू ईमेल्स, थ्रू टेलीफोनिक कॉल, और विजिटिंग देयर ऑफिस फॉर कलेक्शन. आर यू फॉलोइंग? सो क्रेडिट सेल्स है तो कंपनी का एडमिन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. आर यू एबल टू रिकलेक्ट? ये सब याद आ रहा है? Yes, yes, yes. Good. You are able to recollect. That is a good sign. फिर क्रेडिट सेल्स है तो बैड डेट्स होने की भी संभावनाएं है. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट बैड डेट्स में हैपन. कैश सेल्स है तो क्या बैड डेट्स? आज गुड्स लो, आज ही पैसे दो. देयर इज नो स्कोप ऑफ बैड डेट्स. बट क्रेडिट सेल्स है तो पार्टीज माइट not pay the entire amount, they might go into bad debts. ठीक है, क्रेडिट सेल्स है तो कलेक्शन कॉस्ट भी है, एंड क्रेडिट सेल्स है if you want your customer, see, if you have given, ideally you are giving, let's say, a credit of 30 days to your customers, but if you want your customers to pay it early before 30 days, तो कहने से आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा. So that would be discounting cost भी आएगा. There is a probability of discounting cost if there is a credit sales. So can I say credit sales से जुड़ा हुआ cost कौन सा है? A, B, C, D. Admin, bad debts, collection, discounting. A, B, C, D. Anybody can dance. Admin, bad, but हमारा ABCD क्या है? Admin, bad debts, collection and discounting. ठीक है, so credit sales है तो cost will be there in the form of admin, in the form of bad debts, might be in the form of collection, or might be in the form of discounting as well. Yes, and last but not the least, COCD. What was COCD? It was nothing but cost of carrying debtors. Cost of carrying your debtors. डेटर्स को आप जो पाल रहे हो, जो पालन पोषण कर रहे हो, उसको उठाने का खर्चा, दैट इज COCD. और इन मोर टेक्निकल टर्म्स दिस वाज नथिंग बट रेफर्ड टू एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. इसका दूसरा नाम क्या था COCD का? इन मोर टेक्निकल टर्म्स इट वाज रिफर्ड टू एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स और इन रिसीवेबल्स. ठीक है, अब ये COCD होता क्या है? डेटर्स को उठाने का खर्चा है, दैट इज करेक्ट.
बट उसको हम समझेंगे कैसे? व्हाट वाज द सिंपल मीनिंग of COCD? Can anyone try and comment on the chat box? How to calculate COCD is a secondary part. उसके दो स्टेप थे that we know. But before calculating COCD, I want to know उसका मतलब क्या होता है. फुल फॉर्म भी हमने जान लिया, कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स. बट इन लेमैन टर्म्स इसको हम समझते कैसे हैं? दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल. Try wrong to wrong, but at least you can try and comment on the chat box. Yes, Pooja, Aditya, Asta, Kuldeep. What have you understood by the term COCD, cost of carrying debtors? No response. You are not able to recollect. Opportunity loss if invested somewhere. Yes. So what is my debtor? See, let's say if I am giving credit of 30 days to my customers. So can I say, let's say for example, आज on day one I sold goods to my debtors and I am giving credit of 30 days. Credit period of 30 days. तो कैन आई से उसका पेमेंट डे 30th पे मुझे मिलेगा. सो इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, डे 30th पे पेमेंट मिलेगा. दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग. बट इन अदर वर्ड्स, कैन आई से दैट अमाउंट is blocked for 30 days in my business? Yes or no? So that amount is blocked for 30 days in my business and I cannot afford this. For smooth running of my business, I cannot afford a single penny to get blocked. Are you following? Are you able to visualize? आज मैंने सेल किया, उसका पैसा 30 दिन बाद आएगा. तो कहना ऐसे इन सिंपल टर्म्स, ये 30 दिन के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है and I cannot afford this. Why? For smooth running of my business, I need money flow constantly. I cannot afford a single penny getting blocked for even one day. बट सर 30 दिन तो होगा ही. यू हैव नो ऑप्शन. आज सेल किया है, क्रेडिट पीरियड 30 डेज है. यू हैव नो ऑप्शन. 30 दिन के लिए पैसा भूल जाओ, आपके पास पैसा कुछ भी नहीं रहेगा. Hey, but I cannot afford that. That is what I'm saying. So now what option I have? I have two options. आप 30 दिन के लिए कहीं और से पैसा अरेंज करो. मीन्स you borrow funds from outside for 30 days. Or if you don't want to borrow funds, you invest your own funds for 30 days. Are you following? आपका पैसा कहीं और लगा होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो इन्वेस्टमेंट को तोड़ दो और बिजनेस में 30 डेज के ले लिए लगा दो. Are you following? I cannot accept even a single penny to get blocked into the business. बट सर दिख रहा है 30 दिन के पहले डेटर्स पैसे नहीं देंगे, ब्लॉक ही होने वाला है. आप शांति से बैठो, कुछ मत करो 30 दिन के लिए. आई कैन नॉट अफोर्ड दैट. आई वॉन्ट टू रन माई बिजनेस स्मूथली. तो नाउ व्हाट ऑप्शंस आई हैव? either you borrow the funds from outside, from your friends, relatives, bank for 30 days, or either you invest, you break some FD, you sell some shares, you sell some flat and invest that amount in your business for 30 days. Are you following? So if we are, let's say if we are borrowing funds from outside, so can I say I have to pay interest for 30 days? So that interest is nothing but cost of carrying debtors. Yes or no? ये सब कॉस्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज डेटर्स को मैंने क्रेडिट दी इसलिए. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स. Correct? And if you are investing your own funds, so can I say there would be losing an opportunity of ROI from somewhere else? आप कहीं और पे, लेट से ये पैसा आपका कहीं और पार्क हुआ होता फॉर 30 डेज.
गोल्ड में हुआ होता, फ्लैट में हुआ होता, एफडी में हुआ होता, बॉन्ड्स में हुआ होता, कहीं और इन्वेस्टेड होता ये पैसा. नाउ यू नीड टू ब्रेक दैट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस and bring that amount in the business. So can I say you're losing an opportunity to earn ROI from somewhere else? So that's why it is also called as opportunity cost of investment in debtors. Why you are losing an opportunity? Because amount is blocked in the debtors. Are you following? So that's why it is also called as COCD or opportunity cost of investment in debtors. Followed everyone? So this was a simple understanding or in layman terms explanation of COCD or opportunity cost of investment in debtors. Step 2. How to calculate COCD? So if you recollect, we follow two simple steps. Two steps to calculate COCD. Step 1. Calculate your debtors. Calculate the amount of debtors. So can I say ideally debtors is calculated as credit sales into average collection period divided by 12, 365, 52. But now the question arises, क्या sales amount पे आपका पैसा blocked है कि cost of sales में आपका पैसा blocked है? Tell me. दिस इज द सेल्स अमाउंट. सेल्स इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट. तो क्या प्रॉफिट में अमाउंट ब्लॉक होता है? वो आपके जेब से गया हुआ है प्रॉफिट? नो. करेक्ट. सो अमाउंट ब्लॉक्ड इज ऑलवेज इन द कॉस्ट. सो हियर we value debtors not on credit sales but we value debtors on cost. Are you following? On cost of sales. Understanding? But in some questions there is no information about cost. So in that case, due to lack of information, we value debtors on sales. ठीक है? But ideally, debtors are valued on cost of sales. So step 1 was to calculate debtors. ठीक है? So let's say by following step 1, हमारा debtors for the time being, let's say 2 lakh rupees आया. Step 2 was applying COCD rate on debtors calculated in step 1. Step 2 क्या था? Apply your COCD rate if you are borrowing from outside, or if you are investing your own fund, apply ROI percentage on debtors calculated in step 1. ठीक है? So can I say, let's say if COCD is 15%, so can I say my COCD in rupees would be 2 lakh ka 15%, which comes to 215 to 30,000. Everyone following? This is how we used to calculate COCD in rupees. Two-step process. Calculate debtors based on cost. Step 2, apply your COCD or ROI percentage on the value of debtors calculated in step 1. याद आ रहा है? Are you able to recollect, students? Okay. So this was about receivables management. But ये हम benefits, ये cost हम calculate क्यों कर रहे हैं? The only objective to calculate benefits and cost was to evaluate different credit policies and select the best one in the company's interest. Are you following? ये benefit less cost हमें net benefit मिलता था. Benefit less all the cost we used to get net benefit. A net benefit ढूंढने का ultimate मकसद क्या था? To evaluate net benefit for different credit policies for different credit periods and select the best one. Okay, so this was learning objective number 1 of receivables management. What was it? Evaluating different credit policies and selecting the best one. अब बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी कौन सी होती थी? जो क्रेडिट पॉलिसी में
हाईएस्ट नेट बेनिफिट जनरेट होता था, दैट वाज कंसिडर्ड एज बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी. रिकलेक्टिंग. सो इफ यू रिमेम्बर, इसमें भी हम नेट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट बनाते थे, वेरिन हम कंपेयर करते थे डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसी. लेट्स से एग्जिस्टिंग पॉलिसीज 30 days, तो क्या वो कंपनी के लिए बेस्ट है? या इफ यू रिमेम्बर, देयर वर डिफरेंट पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3 विद डिफरेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड, 40 days, 50 days, 65 days. कौन से क्रेडिट पॉलिसी is the best in the interest of the company and in turn in the interest of the owners? तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम नेट बेनिफिट कैलकुलेट करते थे. नेट बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? So we used to prepare an income statement. Are you following? Sales less variable cost, contribution मिलता था, less fixed cost करते थे, yes or no? EBIT मिलता था, ठीक है. एंड इस EBIT में, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से वी यूज टू सब्ट्रैक्ट एडमिन, ABCD COCD, एडमिन कॉस्ट, बैड डेट्स कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, डिस्काउंटिंग कॉस्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट COCD. आर यू फॉलोइंग? एंड अगर आपको याद हो तो COCD हम वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करते थे या इनकम स्टेटमेंट में नहीं बनाते थे. इनकम स्टेटमेंट को हम क्लियर रखते थे टू द एक्सटेंट पॉसिबल. सारे कैलकुलेशंस हम वर्किंग नोट में करते थे. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट ABCD COCD फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वी यूज्ड टू गेट नेट बेनिफिट बिफोर टैक्स. नेट बेनिफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स माइनस करते थे एंड वी यूज्ड टू गेट नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स. याद आ रहा है स्टूडेंट्स? सो जिस भी पॉलिसी में नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा, वो पॉलिसी सिलेक्ट होती थी एंड वी यूज्ड टू कमेंट दैट कंपनी शुड गो फॉर सो एंड सो पॉलिसी एज नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स इज हाईएस्ट. Understood the format? So this was the income statement that we prepared for evaluating different credit periods given to customer and selecting the best one from those credit period. Crystal clear? This was learning objective number 1. Learning objective number 2 was can anyone guess क्या था? Was factoring. Concept of factoring. Tell me, factoring माने क्या? Don't tell me how to calculate factoring cost, factoring interest, factoring commission. That is a secondary part. But पहले always start with understanding of the meaning of the term. Understand the meaning of the term. ठीक है? So factoring माने क्या? Yes, outsourcing. Correct. You all remember perfectly. It is similar to the concept of outsourcing. यहाँ पे हम कौन सी सर्विस आउटसोर्स कर देते थे? कलेक्शन सर्विस. Why? Because I don't have enough time for collecting the money from my customers. I want to focus on my core business operations. मुझे सेल्स, प्रोडक्शन इस पे फोकस करना है, मुझे कलेक्शन पे फोकस नहीं करना है. तो मैं क्या करूंगा? आई विल एंटायरली आउटसोर्स दिस कलेक्शन प्रोसेस टू अ फैक्टर. A factor is nothing but a bank or a financial institution. What is their job? They will collect the money from our customers. Are you following? They will collect the money on our behalf from our customers. But will they do this task free of cost? Obviously, वो समाज सेवा करने तो नहीं बैठे. They are also here to do business, so they will charge some fees called as factoring fees.
और दे कैन से यू कैन से कमीशन कॉल्ड फैक्टरिंग कमीशन। ठीक है। सो फैक्टरिंग का काम क्या होता है? कलेक्शन on our means company's behalf, huh? Our means on company's behalf, and in turn can I say they will charge some fees called factoring commission or factoring fees। ठीक है। So this was one kind of service that factoring provides। अनदर सर्विसेज वो कलेक्शन तो करके देंगे, बट जो आपका पैसा डेटर्स में ब्लॉक हो रहा है ना, जो फंड्स आपको चाहिए ना, जो पैसा डेटर्स में ब्लॉक हो रहा है, दैट फंडिंग ऑल्सो विल फैक्टरिंग विल डू। आर यू फॉलोइंग? सो आइडियली देर आर टू काइंड ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज। वन इज those factoring service who only provides collection service, who only does the collection task on our company's behalf. But there are some factors who also provide funding over and above providing this, or over and above doing this collection task. Are you following? So apart from that, some factors additionally provide, grant us advance for the amount that is blocked in the debtors। ठीक है। सो फैक्टर क्या बोलता है, आप बैंक से क्यों लोन ले रहे हो, हम भी ये एडवांस की सर्विस देते हैं, वी विल ग्रांट यू एडवांस। हम कलेक्शन तो कर ही रहे, बट आपको पैसा भी चाहिए ना, वो हम ही प्रोवाइड करते हैं ना। आर यू फॉलोइंग? ऑल सर्विस अंडर वन रूफ। क्लियर? yes, discount will be there for customers who pay within time, even if factoring is there। yes, you need to bear that discounting। So again, it depends on the factoring agreement। Factoring agreement, next point was factoring agreement only। Factoring agreement, what is the factoring agreement? It is a legal document, legal covenant, covenant बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Legal document wherein all the terms and conditions between company and factoring would be noted down over there। So उस factoring agreement कौन से terms and conditions ideally होते हैं? Factoring agreement is nothing but a legal document or a legal covenant that consists of all the terms and conditions agreed between two parties। Between whom? Between company and factor। तो उसमें अग्रीमेंट में क्या क्या होगा, तो फैक्टरिंग फीस कितनी रहेगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अगर एडवांस ग्रांट कर रहे हैं फैक्टर टू द कंपनी, तो व्हाट वुड बी इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन एडवांस, उसके बारे में लिखा होगा। अच्छा, वेदर अ फैक्टरिंग इज अ रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, इसके बारे में लिखा होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिकोर्स फैक्टरिंग? recourse means बोलो, recourse माने recourse kind of factoring। bad debts will not bear by factors, bad debts borne by company। any other comments? Bad debts borne by company in recourse। okay, Kuldeep is saying bad debts company will bear in recourse। Asta is saying bad debts will not bear by factors, means वही कहना चाहते हो आस्था आप भी कि company will bear the bad debts। recourse factoring means you are right, सारे bad debts losses will be borne by, सारे bad debts losses will be borne by। अच्छा, Pooja is saying non-recourse bad debts by factor। yes, so recourse means company will bear all the bad debts losses, and if the
factoring is non-recourse, factor will bear all the bad debts losses. ठीक है? And ideally in absence of information whether it is recourse non-recourse, what is our standard assumption? Bad debts will be borne by factor. ठीक है? This is the normal industry assumption. इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है. इफ नथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड देन जो भी बैड डेट्स लॉस होगा वो कौन बेयर करेगा? फैक्टर. व्हाई? इट इज लॉजिकल ना. हमने पूरा कलेक्शन टास्क आपको दिया हुआ है, तो नाउ इट इज योर जॉब कि सारा 100% कलेक्शन हो. अब आप 100% कलेक्शन नहीं कर पा रहे हो तो आपके साइड कुछ गलती हो रही है, सो यू बेयर द लॉस. आर यू फॉलोइंग? सो दिस इज अ स्टैंडर्ड assumption इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है? सो लाइकवाइज डिस्काउंटिंग एक्सपेंस का भी क्लॉज होता है अग्रीमेंट में कि वेदर डिस्काउंटिंग एक्सपेंस विल बी borne बाय कंपनी इफ दे आर पेइंग अर्ली, इफ द कस्टमर्स आर पेइंग अर्ली. तो क्या डिस्काउंटिंग एक्सपेंसेस वो लॉस कंपनी बेयर करेगी कि फैक्टर बेयर करेगा? ठीक है? सो अगेन हियर it is the company that bears the discounting expense. Why? Because पहले कंपनी डिस्काउंट देती थी. even after the company is giving contract to the factor, there are some customers who makes the payment early. So factor will say नहीं भाई, वो डिस्काउंटिंग एक्सपेंस हम हमारे सर पे नहीं लेंगे, वो आपको ही बेयर करना पड़ेगा. ठीक है? हाँ, if it is expressly written in the factoring agreement कि discounting expense will be borne by factor, तो फिर factor ही bear करेगा, company will not bear. ठीक है? But you need to check the agreement, you need to check the covenants, what exactly or what expressly it is written. So generally the presumption for discounting expenses, it will be borne by the company. For bad debts, it is the general presumption is it will be borne by the factor. ठीक है? what will be for admin expense? now can I say हमने कलेक्शन प्रोसेस पूरा फैक्टरिंग को दे दिया है, तो एडमिन एक्सपेंस हम क्यों बेयर करें? अब सारा जो भी एडमिन कॉस्ट है वो फैक्टर लगाएगा, अपनी टीम लगाएगा कलेक्शन के लिए, अपने आदमी भेजेगा कस्टमर के ऑफिस में, अपने आदमी को बोलेगा कि फॉलो अप टू द कस्टमर. सो फैक्टरिंग agreement, if we go for factoring service, then admin expense will be not be borne by the company. ठीक है? So factoring under factoring concept, the questions asked, उसमें हम क्या करते थे? We used to evaluate क्या हमें collection in house ही continue करना चाहिए या we should outsource our collection service to the factor. This was our whole evaluation under factoring concept questions. Are you following? हम यही चेक करते थे कि क्या हमें इन हाउस कलेक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें फायदा है, उसमें नेट बेनिफिट ज्यादा है, कि हम हमारे कलेक्शन सर्विस को आउटसोर्स कर दे फैक्टर को, उसमें फायदा हो रहा है कंपनी का. Are you following? So again इसमें भी हम नेट बेनिफिट ही ढूंढते थे, बट नेट बेनिफिट में यहां पे क्या फॉर्मेट होता था? सेम फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन आइदर ऑफ द केसेस विल नॉट चेंज. व्हाई? बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. सो इफ वेदर यू डू इन हाउस कलेक्शन और वेदर यू गो फॉर फैक्टर सर्विस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वॉज सेम इन आइदर ऑफ द केसेस. ठीक है? बट अब इफ वी गो फॉर इन हाउस कलेक्शन, कैन आई से एडमिन कॉस्ट कंपनी को बेयर करना पड़ता है. बट इफ कंपनी अवेल्स फैक्टरिंग सर्विस, एडमिन कॉस्ट कंपनी को बेयर नहीं करना पड़ेगा, फैक्टर विल बेयर. सो इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न if we go for factoring service. Next was bad debts. Again, if you are doing in-house collection, bad debts हमारी responsibility है, उसका loss हमारे सर पे आएगा. But if we are availing factoring services,
the loss due to bad debts will be borne by factor and not company. So we will not consider under the factor column. Are you following? फिर आता है collection cost. So again collection cost के साथ same. If we are going for in-house collection, we have to bear the collection cost. ठीक है, but factoring को पूरा काम सौंप दिया है तो collection cost he has to bear. Are you following? But as far as discounting is concerned, company has to bear the discounting expense. ठीक है. अच्छा, if company does not want to bear the discounting expense, then expressly write that term and condition in your factoring agreement. ठीक है. Then हम इसमें माइनस करते हैं फैक्टरिंग कमीशन, या आप फैक्टरिंग फीस बोल सकते हो, फैक्टरिंग कमीशन बोल सकते हो. So can I say if we are doing in-house collection, there is no point of paying any factoring fees, factoring commission. But if we are availing factoring service, we need to pay factoring fees, which is ideally a percentage of sale, certain percent of sales. ठीक है. फिर आता था interest on advance granted. Interest on advance granted. ये हम इन हाउस कलेक्शन कर रहे हैं, देयर इज नो स्कोप ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस ग्रांटेड बाय फैक्टर. ठीक है, फैक्टरिंग से कुछ अमाउंट एज एन एडवांस हम नहीं ले रहे, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट. बट इफ वी आर अवेलिंग फैक्टरिंग सर्विस एंड फैक्टर इज ग्रांटिंग अस सम एडवांस, उस पे इंटरेस्ट भी आएगा. ठीक है. फिर आता था सीओसीडी. सीओसीडी अंडर इन हाउस कलेक्शन आएगा, बिकॉज हमने फैक्टरिंग से तो कोई लोन लिया नहीं है, सो वी विल टेक लोन फ्रॉम आउटसाइड, सो वी नीड टू पे सीओसीडी. एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टरिंग केस में भी सीओसीडी आता था, बट ओनली टू द एक्सटेंट फॉर द अमाउंट दैट वाज नॉट ग्रांटेड बाय फैक्टर. आर यू फॉलोइंग? सो व्हाट डज, अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, सीओसीडी अंडर फैक्टरिंग भी आता है, but only to the extent of amount that is not received from factor. Are you following everyone? So let's say हमारा पैसा डेटर्स में ब्लॉक हुआ है 30 लाख. ठीक है. अब 30 लाख में से लेट्स से फैक्टर इज ग्रांटेड अस 25 lakhs. तो कहना है उस 25 लाख पे तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस आएगा, बिकॉज दिस इज फैक्टर granting us an advance. But still my amount blocked is 30 lakhs in debtors. This is the amount blocked, 30 lakhs. उसमें से 25 लाख मुझे फैक्टर दे रहा है, फैक्टर 25 लाख दे रहा है, तो कहना है इंटरेस्ट ऑन एडवांस ग्रांटेड will be calculated on 25 lakh. But still 5 lakh is needed. Still 5 लाख ब्लॉक है जो जिसका फंडिंग अभी तक हुआ नहीं है. So that again this 5 lakh I can arrange from loan from bank, loan from friends, loan from relatives, or I can invest my own funds. ठीक है. So in that case COCD would be applicable only to the extent of this 5 lakh and not entire amount. Yes or no? 30 लाख is the amount blocked, 25 लाख फैक्टर ने दे दिया, तो अब बैलेंस हमें कितना अरेंज करना है? 5 लाख ही करना है, तो सीओसीडी 5 लाख पे ही आएगा. अंडरस्टूड? सो सीओसीडी आएगा बट पार्शियली आएगा. हाँ, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इफ यू रिकलेक्ट, हम सीओसीडी इग्नोर करते थे इन फैक्टरिंग क्वेश्चन. क्यों इग्नोर करते थे? क्योंकि सीओसीडी का रेट अवेलेबल नहीं होता था, इसलिए इग्नोर करते थे. यस, करेक्ट आस्था. फैक्टर जो रिजर्व्स रखता है ना, वो तो फंडिंग हमें नहीं मिल रहा है, सो दैट फंड वी नीड टू अरेंज फ्रॉम समवेयर एल्स. ठीक है. तो उस रिजर्व्स पोर्शन के लिए we might take a loan or we might invest our own funds, and in that case COCD would be applicable. But if you see in most of the question, we used to ignore, in most of the question of factoring, we used to ignore COCD. Why? Because COCD का applicable
परसेंटेज स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं होता था, ठीक है. सो दिस वाज द होल चार्ट फॉर इवैल्यूएटिंग नेट बेनिफिट ऑन फैक्टरिंग क्वेश्चंस. ठीक है. अच्छा, हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एडवांस ग्रांटेड? इंटरेस्ट ऑन एडवांस ग्रांटेड ये कैसे कैलकुलेट करते थे? सो स्टेप वन अगेन, कैलकुलेट द अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स. कैलकुलेट अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स. ठीक है. सो वी यूज टू फर्स्ट कैलकुलेट डेटर्स. बट इफ यू रिमेंबर, इन फैक्टरिंग क्वेश्चंस आई गिव यू अ स्पेसिफिक नोट कि जितने भी फैक्टरिंग क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस में, उसमें डेटर सारे सेल्स पे वैल्यू की है. ठीक है. सो फॉर फैक्टरिंग क्वेश्चंस वी विल ऑलवेज वैल्यू डेटर्स ऑन सेल्स. सो डेटर्स विल बी सेल्स इनटू एसीपी डिवाइड बाय 12, 365, 52. सो डेटर्स का अमाउंट मिल गया. सो अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स मुझे मिल गया. ठीक है. अब इसमें से फैक्टर क्या बोलता है? वी कैन नॉट ग्रांट यू, लेट से दिस अमाउंट कम्स टू 30 lakhs. So we cannot grant you entire 30 lakhs. We will keep some reserves as a part of our business practice. So let's say factoring reserve is 10%. So factor is saying you need 30 lakhs, correct? But we will not provide you advance of 30 lakh. We will first subtract reserves from this. So gross advance that we can grant to you is 27 lakhs. So company is saying ठीक है 27 लाख दे, 30 लाख नहीं दे सकता तो 27 लाख दे. बट फैक्टर इज नाउ प्लेइंग वन मोर गेम विद अस. ही सेइंग सर हमारे बिजनेस प्रैक्टिस में कैसा है पता है? जो फैक्टरिंग कमीशन बनता है ना वो पहले ही काट लिया जाता है. जैसे गोल्ड लोन, इफ समवन अवेल्स द लोन बाय hypo by keeping by mortgaging gold with the party. So let's say if you want to avail a gold loan and if you pledge, if you mortgage gold and you take a loan, तो गोल्ड लोन में आइडियली कैसी प्रैक्टिस है? पहले ब्याज काट दिया जाता है. सो इफ यू नीड 10 lakhs का लोन तो 10 lakhs पे जो ब्याज बनता है ना वो पहले ही काट दिया जाता है. एंड दे ग्रांट यू नेट एडवांस. आर यू फॉलोइंग? सो लाइकवाइज फैक्टर इज सेइंग सर हमारे बिजनेस प्रैक्टिस में कमीशन पहले काट दिया जाता है. So we cannot grant you 27 lakh. 27 lakh में से we will first subtract our commission. So let's assume it is 2% on sales. So can I say 2% on this 30 lakh which comes to 60,000? So this we will subtract and we can grant you net advance of 26 lakh 40,000. ठीक है. This is what factor will grant. And can I say I will pay interest on this amount? So let's say interest is 12% per annum. So my interest on advance granted would be 26.4 lakh का 12%. ठीक है. सो मुझे चाहिए था 30 lakhs. माई अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स इज 30 lakhs. बट फैक्टर ने मुझे पैसे कितने दिए? 26.4 lakh. तो कहना है इसे 3,60,000 मुझे स्टिल अरेंज करने हैं. सो आई विल टेक अ न्यू लोन फ्रॉम फ्रेंड, रिलेटिव्स, अदर बैंक, और आई विल इन्वेस्ट माई ओन फंड्स. सो कहना है इसे फॉर 3,60,000. That is nothing but the amount that factor has not given to me, जो उसने काट लिया है. Can I say I need to arrange it from somewhere else? So उस पोर्शन पे COCD आएगा. हाँ, that COCD calculation again will only be done if question has given you COCD rate specifically. Clear? हाँ, this is practical example for COCD.
30 lakhs is the amount that you need. फैक्टरिंग से एडवांस मिला 26,40,000. सो कहने से 3,60,000 हमें कहीं और से स्टिल अरेंज करना है. फैक्टर ने तो मना कर दिया, फैक्टर ने तो हाथ ऊपर कर दिए, फैक्टर ने भगा दिया 26.4 लाख देके. सो अब 3,60,000 अरेंज करने के लिए मैं कहा जाऊंगा? दूसरे बैंक के पास जाऊंगा, रिलेटिव्स के पास जाऊंगा, फ्रेंड्स के पास जाऊंगा, या फिर मैं अपने खुद के फंड्स डालूंगा. सो फॉर दैट पोर्शन सीओसीडी विल बी एप्लीकेबल. COCD not on interest amount that he deduct means what are you trying to say? I'm not able to interpret. COCD will apply on 3,60,000. This is the whole point. That is on the amount which is not funded by the factor. ठीक है? COCD will be applied on 3,60,000. That is the amount which is not funded by the factor. क्योंकि फैक्टरिंग जो फंडिंग करके दे रहा है उसके सामने हम ब्याज भर रहे हैं ना ऑलरेडी. How can we afford paying more interest? How can we afford paying interest again on this 30 lakh? We can now only afford paying interest for 3,60,000. So this was about factoring. Clear till here? So we completed estimation of working capital concept. We completed format of estimating the working capital. We completed understanding format of cost statement. We completed understanding the concept of working capital, operating cycle and its duration. We completed financing of working capital based on permanent and temporary working capital needs. We completed evaluation of different credit policies and selecting the best one. The best credit period would be that credit policy which generates highest net benefit. Highest net benefit कैसे calculate करते? It is nothing but operating profit less ABCD COCD. We completed concept of factoring. Factoring है तो factoring either will outsource, either will provide us collection service, or in addition they may also grant us some advance that we need. So if they are granting advance, they will charge interest on it. So this was all about receivables management. If penalty is to charge those customers who pay, who not pay, then on penalty will not be on bad debts. Again, I am not able to understand your question. क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूं. पेनल्टी ऑन बैड डेट्स समझा नहीं. So if we are charging penalty on bad debts, first of all bad debts पे penalty क्यों लगाएंगे? Bad debts is the amount lost. हाँ, फ्यूचर में वो बैड डेट्स रिकवर हो रहा है तो पेनल्टी के साथ रिकवर हो सकता है. But now we are focusing on bad debts loss, amount loss due to bad debts. Next concept was cash and treasury management. Cash and treasury management. So इस चैप्टर में our focus, or we learned, I would say in short, we learned two things. One was forecasting of your future cash needs. Forecasting of your future cash requirements. So let's say we are on 9th of April. हम एज अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि आफ्टर 6 months दिवाली के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट लेना है, बिकॉज इट इज वेरी ल्यूक्रेटिव. इट इज द राइट टाइम आफ्टर दिवाली टू टेक अ न्यू प्रोजेक्ट. तो कहना है प्रोजेक्ट लेना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा. यू विल नीड सम फंड्स, यू विल नीड कैश आउटफ्लो. So for that,
आज से लेके 6 महीने बाद की क्या पोजीशन होगी वो जाननी जरूरी है। वी आर सिटिंग ऑन 9th of April, प्रोजेक्ट लेना है 9th of November। तो 9th of November जब हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट, पैसे लगेंगे। तो कहना है आई नीड टू फोरकास्ट कि 9th of November पे व्हाट would be my estimated cash balance so that I can prepare accordingly for my new project. Are you following? So example, project cost is 10 lakh, बट हमारे फोरकास्ट हमारे एस्टिमेशन से हमें पता चल रहा है कि 6 महीने बाद हमारे पास कैश रहेगा सिर्फ 1 लाख। सो कैन आई से अकॉर्डिंगली डिसीजन विल बी मेड कि ओ ओके, तो 9 लाख का आप बोरोड फंड लाओ, 9 लाख के लिए आप नए इक्विटी शेयर्स इशू करो, 9 लाख के लिए आप एग्जिस्टिंग रिजर्व्स यूटिलाइज कर दो। आर यू फॉलोइंग? सो फॉर ऑल सच डिसीजन मेकिंग you need future cash balance, and for that you need to forecast your future cash requirements. Are you following? And for that, can I say you need to prepare cash budget? So objective 1 of this chapter was preparing cash budget. क्या था ऑब्जेक्टिव? preparing cash budget. सॉरी, नॉट कैश बजटिंग, कैश बजट। ठीक है? कैश बजट इज नथिंग बट फोरकास्टिंग योर फ्यूचर कैश बैलेंसेस। सो जो आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, वही रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमें इस चैप्टर में बनाना है। बट द ओनली डिफरेंस इज, आप जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते थे ना, वो हिस्टोरिकल डेटा का बनाते थे। मींस for those transactions that has already been occurred in the past. Are you following? History, historical data, the transactions that had already occurred in the past, uska receipt payment account bana dete hain. But in this chapter we would be preparing receipt payment account not for historical data but for your future data. आने वाले 6 महीने में क्या सेल परचेस हुआ होगा, क्या पेमेंट हुआ होगा, मीन्स सॉरी, क्या हुआ होगा नहीं, क्या पेमेंट हो सकता है, क्या रिसिप्ट हो सकती है, उसका हमें बजटिंग करना है। ठीक है? सो दैट वी कैन गेट फ्यूचर कैश बैलेंस एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड? सो कैश बजटिंग का आइडियली फॉर्मेट क्या होता था? मंथ्स लिखते थे, अप्रैल, मई, जून, July. Let's say we need to prepare cash budget for 4 months, for the upcoming 4 months. So this cash budget is nothing but receipt payment account. हम ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते थे, उसमें we used to add some receipts and deduct the payments. So opening plus receipts less payment, we get closing cash balance. So let's say closing cash balance of April will be opening cash balance of May and so on. Closing cash balance of May will be opening for June. Closing for June will become opening for July and so on. Ideally the general receipts would be, अच्छा यहाँ पे हमें receipts कब पैसे आ रहे हैं, कब पैसे जा रहे हैं, उस पे फोकस करना है। कब सेल परचेज या एक्सपेंस हो रहा है उस पे फोकस नहीं करना है। लेट्स से सेल इज हैपनिंग इन मार्च बट उसका पेमेंट अप्रैल में मिल रहा है, तो दैट पेमेंट रिसीव्ड इन अप्रैल इज रेलेवेंट फॉर कैश बजटिंग। सेल मार्च में हो रहा है, दैट इज फाइन, इट इज नॉट आवर कंसर्न इन दिस चैप्टर। उसका पेमेंट कब मिल रहा है, दैट इज रेलेवेंट फॉर अस। अच्छा, परचेज कर दिया फेब में, उसका पेमेंट मई में हो रहा है, तो परचेज कब हो रहा है इज इररेलेवेंट। पेमेंट कब हो रहा है परचेज का, इन में, सो इट इज रेलेवेंट फॉर आवर बजटिंग पीरियड। आर यू फॉलोइंग? सो कब द टाइमिंग ऑफ रिसीप्ट्स एंड द टाइमिंग ऑफ पेमेंट इज रेलेवेंट, whether the receipts and payments are falling in our budgeted period. If yes, it is relevant, if no, irrelevant. Understood? So can I say यहाँ पे receipts में ideally receipts from cash sales आता था,
क्रेडिट सेल्स नहीं आता था बट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आता था। क्रेडिट सेल्स का कलेक्शन कब हो रहा है, दैट इज रेलिवेंट। फिर अगर हमने नई लोन ली है, न्यू लोन टेकन, वो आता था। सेल, इफ वी आर सेलिंग एनी फिक्स्ड असेट्स, वो सब चीजें रिसिप्ट्स में आता था। आर यू फॉलोइंग? इफ वी आर इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स, वो भी रिसिप्ट में आएगा। पेमेंट में आए क्या आएगा, कैश परचेजेस। इफ देर आर क्रेडिट परचेजेस देन उसका पेमेंट कब हो रहा है, दैट इज रेलेवेंट। सो पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर क्रेडिट परचेजेस। अच्छा, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस आता था। परचेजेस के अलावा और भी एक्सपेंस हो गए जैसे सैलरी, रेंट वगैरह वगैरह, so उसका पेमेंट कब होता था, दैट वुड कम अंडर पेमेंट साइड। सी दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। सिर्फ इतने ही लाइन आइटम्स है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दिस आर जस्ट द कॉमन लाइन आइटम्स दैट यू वुड सी अंडर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन आएगा। आर यू फॉलोइंग? अच्छा, बाइंग ऑफ अ न्यू मशीन और बाइंग ऑफ अ न्यू फिक्स्ड असेट आएगा। This all will come under payments, and then we will find closing balance. ठीक है? So at the end of July, we will get to know कि let's say जुलाई के अंत में हमारा estimated balance हो सकता है 5 लाख रुपया। It is estimated that at the end of July, our balance would be 5 lakh, and we are planning to take a new project worth 10 lakh. So can I say now our objective would be to arrange the balance 5 lakh? कि ओके, अब मुझे पता चल गया 10 लाख का प्रोजेक्ट लेना है जुलाई के बाद, 5 लाख तो कैश बैलेंस अवेलेबल होगा। सो बैलेंस में कितना पैसा रेज करूंगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, वेदर आई शुड रेज इक्विटी, whether I should go for that. This all decision can be done only if you are ready with your cash budget. Only if you are ready with this 5 lakh figure. Are you understanding the importance of cash budget? Significance of cash budget? Provisions. See, provisions में कैश आता नहीं है, जाता नहीं है, so it will not affect our cash budget. हाँ, प्रोविजन का अगर फ्यूचर में पेमेंट हो रहा है एंड वो पेमेंट हमारे बजटेड पीरियड में है, देन इट इज रेलेवेंट। बट जस्ट बाय क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर एग्जांपल, सो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है प्रोविजन फॉर टैक्स की? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सो nowhere cash is going out. Sorry, P&L account to provision for tax. We are creating a provision, na? So entry would be P&L account debit to provision for tax. So here there is no cash inflow or outflow. But जब ये provision for tax will actually be paid, and if that payment of tax is falling in our budgeted period, then it is relevant. ठीक है? So this was the Sir, format for, हाँ, sir, in question number 9 in study met, there is written that therefore provision should be made for the payment of 8,000 and 25,000 for the same. Sir, there the deduction is made in cash budget. so what they are trying to mean is, you know, that provision for tax हमने किया है ना, that would be actually paid in that month itself. This is what they are trying to say. Okay, But sir. ideally provision means what? Ideally you are creating a liability for provision. ठीक है? And then when actually it is paid, at that time it will come under the cash budget. बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, प्रोविजन फॉर टैक्स इज डन इन जुलाई, सो दे आर ट्राइंग टू मीन कि वो प्रोविजन जुलाई में की और जुलाई में पेमेंट भी कर दिया। Okay, sir. ठीक है? Yes, here you can also assume that provision means arranging for tax, arranging the funds for tax means उसका arrangement कर रहे हो। ठीक है? That also is a correct interpretation. But ideally, by accounting terminology, provision for tax means you are first creating a liability. So it is just like credit purchase. You are first creating a liability for purchases, purchase account debit and creditors. फिर जब creditors का payment होता है, that is considered over here. ठीक है?
बट यार प्रोविजन फॉर टैक्स मीन्स टैक्स जो पेमेंट करना है जुलाई में, उसका अरेंजमेंट हम आज कर जुलाई में कर रहे हैं. Okay, so this was cash budget. Apart from this, in this chapter, we also learned about cash management models. Cash management models were trying to tell us ki what is the optimum cash balance that company should keep with it. ठीक है? Optimum cash balance at any point in time, company को कितना रखना चाहिए? That was given by cash management models. So one is William Baumol model. It is very similar to your concept of economic order quantity. What is economic order quantity? It is nothing but optimum order quantity, the best order quantity, wherein your cost is minimum. Are you following? Your ordering cost and storage cost is minimum. So यहाँ पे what is the optimum cash balance for the company? It is that balance where your cost is minimum. ठीक है, where your transaction cost and opportunity cost is equal and lowest. So optimum cash balance model given by William Baumol. Formula क्या थी? 2AT upon I, the whole under square root. ठीक है? A is nothing but annual cash requirement. पूरे साल में आपकी कैश रिक्वायरमेंट कितनी है? T is nothing but transaction cost per transfer or transaction cost per transfer from your investment account to cash account to company's cash account. ठीक है? Transaction cost per transfer means ideally आपका कैश कहीं इन्वेस्टमेंट में पड़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. अब वो शेयर्स सेल करके हम कंपनी के कैश अकाउंट में लाएंगे. So there would be some transaction cost for this transfer, that is T, and I is nothing but interest percentage or ROI percentage, opportunity cost. In other words, it is nothing but opportunity cost. So William Baumol model of cash management is very similar to the concept of William Baumol model of EOQ, economic order quantity. The optimum cash balance that company should keep with itself at any given point in time. Okay, so one of the model was given by William Baumol. Another was Miller and Orr model. Miller Orr model of cash management. What was Miller Orr model of cash management? William Orr were of the opinion कि आप एक हायर लिमिट सेट करो एंड लोअर लिमिट सेट करो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ कैश रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर पास्ट ट्रेंड्स, बेस्ड ऑन फ्यूचर नीड्स. सेट टू लिमिट्स. वन इज द लोअर लिमिट, वन इज द अपर लिमिट. So you should always keep your cash balance between these two range. अच्छा, अगर कैश बैलेंस आपके कंपनी में कैश बैलेंस अपर लिमिट के ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्ट द एक्सेस. इन्वेस्ट द एक्सेस. आर यू फॉलोइंग? Invest the excess and bring back your cash balance to its limit, to its accepted range. ठीक है? अच्छा, अगर कैश बैलेंस लोअर लिमिट के नीचे जा रहा है तो ब्रेक द इन्वेस्टमेंट. आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया ना, उसको तोड़ दो एंड कंपनी में वो कैश बैलेंस वापस लाओ सो दैट इट कम्स बैक टू इट्स normal range limit. Are you following everyone? So ideally company should keep its cash balance between the lower limit and upper limit. ये रेंज के बीच आपका कैश बैलेंस होना चाहिए. अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आइडियली सेट कैसे होता है प्रैक्टिकली? सो प्रैक्टिकली इट इज सेट बेस्ड ऑन योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ योर financial management, based on the past trends, past history, past records,
ये सब कंसिडर करके लिमिट सेट होती है, ठीक है। अपर लिमिट के ऊपर जा रहा है तो एक्सेस आप इन्वेस्ट कर दो, लोअर लिमिट के नीचे जा रहा है ब्रेक द इन्वेस्टमेंट एंड वापस वो पैसा कंपनी में ला दो, सो दैट अगेन द बैलेंस फ्लोज विद इन द एक्सेप्टेड रेंज, ठीक है। दिस वॉज मिलर एंड यस करेक्ट। कुलदीप, you have revised this chapter perfectly. ठीक है, so this was the learning objectives of कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमने कैश बजटिंग सीखा था। इट इज नथिंग बट एस्टिमेटिंग योर फ्यूचर कैश नीड्स। फिर हमने कैश मैनेजमेंट मॉडल सीखा था। कैश मैनेजमेंट मॉडल आर ट्राइंग टू गिव यू ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम कैश बैलेंस में फर्स्ट विलियम बॉमल ने उसका मॉडल दिया by giving the formula 280 upon I, the whole under square root. It is replica of EOQ concept. मिलर और ने क्या बोला? It is not logical to have a fixed unified optimum cash balance. कंपनी का कैश बैलेंस might fluctuate over here and there based on its needs. So एक ही अमाउंट सेट कर देना is not logical. William Baumol gives only one amount. At any given point in time, let's say this comes to 15,000 rupees. तो कंपनी का ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज 15,000, बट मिलर और आर्ग्यूज के ये 15,000 दिस इज अ यूनिफॉर्म अमाउंट, दिस इज नॉट लॉजिकल। कंपनी का कैश नीड्स माइट गो अबव 15,000 समटाइम्स, उससे कम भी हो सकता है। सो यू सेट अ रेंज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। हाँ, एंड योर कैश बैलेंस शुड ऑलवेज बी विद इन दोस रेंज, ठीक है। सो दिस वर टू मॉडल्स दैट वी लर्नड इन कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। लास्ट कॉन्सेप्ट वॉज पेबल्स मैनेजमेंट। Just like receivables management is an important aspect of finance, वैसे ही क्रेडिटर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैन आई से पेबल्स मैनेजमेंट मीन्स वी आर कस्टमर्स ऑफ समवन, वी आर कस्टमर्स ऑफ आवर सप्लायर, so our supplier would be granting us a credit period. So let's say if creditors grant us a credit of 30 days, so can I say ideally 30 days तक मैं उनके पैसे यूज कर रहा हूं? Yes or no? I am utilizing the money for 30 days, ठीक है। So ऐसे in layman terms we can see that sir 30 days तक हम उनके पैसे फ्री में यूज कर रहे हैं। इन लेमन टर्म्स डे 1 पे हमने उनसे खरीदी की एंड डे 30th पे वी विल बी मेकिंग द पेमेंट टू देम। So in layman terms, if someone says, oh, you are using their money for 30 days, that too free of cost. But can I say, हमने सीखा था कि एक भी रुपया फ्री में नहीं आता है। There was some implied interest rate that creditors were charging to us. Are you able to recollect? दिखने में on the broader side, on the outer side, दिखने में क्या लगता है? We are using the money of supplier for 30 days free of cost. But उसमें कुछ hidden interest होता था, implied interest होता था। Yes or no? If you recollect, यहाँ पे हम evaluate करते थे whether to avail the discount given by the supplier by making the payment early or not avail the discount and make the payment on the due date. So there were two options. One option was make the payment early and avail the discount. Option 2 was you don't avail the discount that creditor is giving to you, make the payment on the due date, and till that period of time you utilize the money, you invest the money somewhere else. Okay? So this was about payables management, evaluating two things. What?
whether the company should avail the discount and make payment early, or you don't avail the discount, make the payment on due date. Make payment on due date. किसमें कंपनी का फायदा ज्यादा है? This we used to evaluate in this chapter, payables management. ठीक है? Yes, interest on alternate opportunity. So as a finance student, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि not a single rupee in the business is free of cost. उसमें हिडन इंटरेस्ट, हिडन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा ही होगा. हाँ, फ्रॉम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम लेमैन पर्सपेक्टिव, जिसको फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं है, उसको क्या लगेगा 30 दिन तक आप क्रेडिटर्स के पैसे यूज कर रहे हो, दैट टू विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट. बट एज अ फाइनेंस स्टूडेंट वी नो उसमें हिडन इंटरेस्ट छुपा हुआ है, हिडन कॉस्ट छुपा हुआ है. ठीक है. एंड पेबल्स मैनेजमेंट में हमारा टास्क क्या होता था? टू इवेल्युएट वेदर कंपनी शुड अवेल द डिस्काउंट एंड मेक द पेमेंट अर्ली, और इट शुड नॉट अवेल द डिस्काउंट एंड मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट. फायदा किसमें है? ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट पेबल्स मैनेजमेंट. नाउ let's take some practical problems from revision test papers and try to solve some questions. Formula, if I try to explain the formula detail again, then it will take entire 1 hour. I have already explained this in my live regular classes. So if you want to understand the logic and formula, so you can quickly visit those YouTube video and you will understand the formula, the logic behind the formula. So let's come to RTP May 2026, question number 9. It is on working capital. Following information is forecasted by the Puja Limited for the year ending 31st March 2025. See here, there is some printing error on the date, on the year, but you have given balance sheet as on 1st April 2026 and balance sheet as on 31st March 2027. ठीक है. ओपनिंग बैलेंस शीट दी है एंड क्लोजिंग वैल्यूज दी है. ओपनिंग वैल्यू दी है, क्लोजिंग वैल्यू दी है. ओके. So raw material opening closing, WIP opening closing, FG opening closing, debtors opening closing, creditors opening closing. Annual purchases of raw material, all credit is given 4 lakh. Cost of production 750. COGS 9 lakh 15. Operating cost is 9 lakh 50,000. So my cost for daily business operation is 9 lakh 50,000. Sales on credit 11 lakh. You are required to calculate net operating cycle period. ये क्या कैलकुलेट करना है? Net operating cycle period. So can I say they are trying to tell you, they are trying to ask you net duration of operating cycle. ठीक है. So point number 1 is net operating cycle period, or you can say net duration of operating cycle. ठीक है. So we know to calculate net duration, the formula is RM holding period plus WIP holding period plus FG holding period plus average collection period less average payment period. Now check the question. Are the holding periods directly available? Bolo, are the holding periods directly available to you anywhere? So they are not directly available. I cannot see any of the holding period directly available. So can I say we need to calculate holding period using formula? Okay. So how to calculate? Working note 1. Calculation of RM holding period. बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे? What is the formula to calculate RM holding period?
It is nothing but average RM stock. And can I say raw material is based on raw material consumption? Into 12, 12 365 52. अच्छा यहाँ पे डेज है कि डेज बोला है डेज, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 365 एंड नॉट मंथ्स. ठीक है. So average RM stock. Can I say average RM stock will be opening RM 45 plus 65 356 divided by 2? I have already, see, Asta, I have explained the logic of the formula in my regular classes using that interpolation. So you need to check the video correctly. I have given the formula, I have explained through that interpolation concept. I very well remember that. फिर मैंने ये भी बोला था कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला देखोगे तो यू विल फील दैट दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये क्या फॉर्मूला है, बट उसका फिर मैंने इंटरपोलेशन करके समझाया था. द फॉर्मूला डिराइव्ड वाज फ्रॉम इंटरपोलेशन कॉन्सेप्ट ओनली. एंड दूसरा फॉर्मूला वाज कंपाउंडिंग मेथड, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू मेथड. आई वेरी वेल रिमेंबर दिस. गिवन इन द बुक मींस मॉड्यूल की बात कर रहा हूं मैं. Average RM, so raw material holding period is average RM stock divided by raw material consumption into 100. Average RM stock over here would be 45,000 plus 65,356 divided by 2, correct? 45 plus 65,356 divided by 2. This would be my average RM stock. अच्छा, annual raw material consumption कितना होगा? Can anyone tell me what would be the amount of annual raw material consumption? सर दिया है ना, रॉ मटेरियल परचेस 4 लाख. ये कोई भी 4 लाख बोलेगा? 4 lakh is the purchase of raw material, not the consumption of raw material. Consumption of raw material would be opening stock of raw material plus purchases less closing stock. ठीक है. So opening stock is 45,000 plus purchase is 4 lakh less closing stock is 65,356. Are you following, students? यहाँ पे हमें consumption लेना है, not the purchase. Raw material stock is based on RM consumption. So 45. So numerator comes to 45,356. Sorry, 45,000 plus 65,356 divided by 2. 55,178. न्यूमरेटर में आ गया 55,178. डिनोमिनेटर में रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज 45,000 प्लस 4 lakh less 65,356. 379,644 into 365. So my RM storage period comes to 55,178, 379,644 into 365. 53.04 days. You can round it off to nearest days. हाँ, तो आप 53 days ले सकते हो. ठीक है. सो वर्किंग नोट नंबर 1 से मुझे 53 days मिल गया RM होल्डिंग पीरियड. नाउ वी विल कैलकुलेट WIP होल्डिंग पीरियड. Working note number 2, calculation of WIP holding period. Can I say WIP holding period का formula will be average RM holding period में numerator was RM stock. यहाँ पे WIP holding period में numerator will be average WIP stock. Are you following? And WIP is always based on cost of production. Raw material is based on raw material का consumption. Finished goods is based on goods sold का cost. वैसे WIP will be based on production cost into 365. So WIP is 35 plus 51,300. 35 plus 51,300 divided by 2. This is average WIP stock. The whole divided by cost of production is 7,50,000.
into 365. So my WIP holding period comes to 35,000 plus 51,300 divided by 2. 43,150 in the numerator, divide by 750 into 365. 20.9999, so 21 days. ठीक है? So my amount, so my cash was in the form of raw material for 53 days. फिर और 21 दिन के लिए उसने कौन सा रूप लिया? WIP होल्डिंग पीरियड का रूप लिया. ठीक है? Plus 21 days is my WIP holding period. Likewise, working note 3 से हम FG holding period ढूंढेंगे. FG holding period. FG holding period is nothing but average FG stock. The whole divided by an FG is based on goods sold. Yes or no? FG finished goods ही हम sell करेंगे ना. So goods sold का cost of goods sold. We cannot sell unfinished goods. ठीक है? So यहाँ पे FG will not be based on production. It will be based on COGS. So FG stock is 6181 plus 7175 divided by 2. 6181 plus amounts are very odd, huh? Divide by 2. The whole divided by COGS is 9,15,000 into 365. So 6181 plus 7175 divided by 2. 65,178 in the numerator, divided by 9,15,000 into 365. 25.9999. 0.99996. So 26 days. So cash for another 26 days is in the form of FG. ठीक है? Debtors. डेटर्स की फॉर्मूला क्या बनेगी? एवरेज डेटर्स आर वैल्यूड ऑन क्रेडिट सेल्स. ठीक है? इंटू 365. ओके. सो डेटर्स इज एवरेज डेटर्स इज 112,123 प्लस क्लोजिंग इज 135 divided by 2. Annual credit sales is 11 lakh into 365. So average debtors comes to 112,123 plus 135 divided by 2. Numerator comes to 123,562 divided by 11 lakh into 365. 40.99. So around 41 days is blocked in debtors. 41 days. Less APP. Working note. This is number 4. Working note number 5. Calculation of average payment period. Average payment period is nothing but average creditors, and creditors are based on credit purchases into 365. Average creditors 50,079 plus 74,69 divided by 2. The whole divided by credit purchases. Now you don't take, see, creditors are not based on consumption. Huh? Creditors are based on purchases. So can I say 4 lakh का purchases होगा into 365. So 50,079 plus 74,69 divided by 2. 6274 in the numerator, divide by 4 lakh into 365. 55 days. ठीक है? So आज अगर मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया है
तो आज की आज पेमेंट नहीं करूंगा, पेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 55 डेज, ठीक है, पेमेंट विल बी डन आफ्टर 55 डेज। सो कहने से मेरी आइडियली ऑपरेटिंग साइकिल 55 डेज के बाद स्टार्ट होगी, बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैश बैक इनटू कैश। कैश एक्चुअली कब गया होगा, नॉट ऑन डे 1 बट ऑन डे 55, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे वो माइनस कर देंगे 55। सो टेल मी नेट ड्यूरेशन, 53 plus 21 plus 26 plus 41 minus 55. 86 days means, what does this 86 days mean? इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? जो पैसा आज गया है टू बाय रॉ मटेरियल्स, वही पैसा डेटर से मुझे 86 डेज के बाद मिलेगा विद प्रॉफिट। आर यू फॉलोइंग? जो पैसा आज गया है टू पे सप्लायर, वो पैसा वापस कन्वर्ट होते होते विद प्रॉफिट मेरे पास 86 डेज के बाद आएगा। आफ्टर 86 डेज इट विल कम टू मी, ठीक है। सो दिस इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल। सो इफ वन साइकिल इज ऑफ 86 डेज, तो ऐसे हम कितनी बार साइकिल चलाएंगे पूरे साल में? कैन एनीवन टेल? एक साइकिल चलाने के लिए 86 डेज लगता है, तो पूरे साल में हम ऐसे कितनी बार साइकिल चलाएंगे? 365 डिवाइड बाय 86, परफेक्ट। ऐसे हमारी कितनी साइकिल होगी? सो दैट इज पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। एक साइकिल को कंप्लीट होने में 86 डेज लग रहा है, पूरे साल में तो 365 दिन होते हैं, तो पूरे साल में ऐसे साइकिल कितनी होगी? तो कहने से इट विल बी 365 अपॉन 86, सो विच कम्स टू 4.244 साइकिल्स। सो पूरे साल में हम 4.24 टाइम्स साइकिल चलाएंगे वर्किंग कैपिटल की, नॉट रियल साइकिल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज नंबर 2। नंबर 3, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यूजिंग ऑपरेटिंग साइकिल्स। ओके, सो कहना इसे आइडियली अगर मैं 86 डेज के लिए फंड अरेंज कर दूं, the working capital that I need, if I arrange for these 86 days, can I say my job is done? So if I arrange it for one cycle, my job is done. Why? Because एक साइकिल जो कंप्लीट होगी ना, फिर तो सेकेंड साइकिल वुड ऑटोमेटिकली रोटेट, फिर तो साइकिल अपने आप चलने लगेगी। Why? Because आफ्टर 86 डेज मुझे पैसा मिल जाएगा डेटर से, वो पैसे से वापस रॉ मटेरियल खरीदूंगा। So ideally, I just need to arrange funds. I just need working capital equivalent or proportionate to 86 days. Are you following? If I am able to arrange working capital for these 86 days, my job is done. फिर तो साइकिल घूमना, फिर तो साइकिल अपने आप रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। Are you following? Because at the end of this first cycle, which will end on 86 days, मुझे पैसे डेटर से मिल जाएंगे, डेटर से पैसे मिलेंगे, अगेन आई विल बाय रॉ मटेरियल, WIP, रॉ मटेरियल से WIP से FG से डेटर्स, अगेन पैसे मिलेंगे एंड साइकिल विल ऑटो रोटेट। So you need to arrange funds, you need working capital only for 86 days. So can I say working capital required will be annual operating cost. Your annual operating cost is for entire 365 days. But if I'm able to arrange for 86 days only, my job is done. ठीक है? So annual operating cost into 86 days divided by 365 days. ठीक है? So your job is to arrange only proportionate operating cost for 86 days.
ठीक है। सो आपके पूरे साल में एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो रहा है, 9,50,000, ठीक है। ये तो पूरे 365 डेज का है। सो इन अदर वर्ड्स योर कॉस्ट इन द एंटायर ईयर दैट यू विल बेयर फ्रॉम योर पॉकेट, so your cash outflow in the entire year would be 9,50,000। बट मैं कह रहा हूं कि 9,50,000 पूरे 365 दिन का है। इफ यू आर एबल टू अरेंज proportionately for 86 days, your job is done। आपको 9,50,000 अरेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका proportionate to 86 days आप अरेंज करो, your job is done। Are you following everyone? So how much is working capital required? पूरे साल में कॉस्ट इज, पूरे साल में कैश आउटफ्लो होगा 9,50,000, उसका प्रपोर्शनेट टू 86 डेज आप अरेंज कर दो, उतना सफिशियंट है। सो 223 rupees 223,835 is the funds that you will need, that you need to arrange, ठीक है। So this 223,835 means you arrange these funds of working capital, 9,50,000 is your annual cost, annual cash operating cost। 9,50,000 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 223,835 कर दो, your job will be done। Why? Because after 86 days पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे डेटर से, वही पैसा बिजनेस में रोटेट होगा। आर यू फॉलोइंग? सो जस्ट फॉर 86 days you are lacking funds। Understood? Clear? So let's check our answer। 86 days is operating cycle period, number of operating cycle is 4.24, and यहाँ पे amount of working capital required they have used another formula, but at the end answer is same। लॉजिक यही है कि पूरे साल आपको कैश चाहिए 950, बट मैं कहना चाहता हूं आप सिर्फ उसका 86 डेज प्रपोर्शनेटली अरेंज कर दो, योर जॉब वुड बी डन। सो 950 into 86 divide by 365, so this comes to 288,835। 10 रुपए का डिफरेंस इज ड्यू टू राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, हाँ, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे 4.244 लिया है ना, अगर पूरा डेसिमल लेते तो एग्जैक्ट 835 आता। Understood, students? Clear? So this was question in May 2026 RTP, question 9, working capital। We still have time, let's check question on working capital in Jan 2026 RTP। पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में देखते हैं वेदर देयर इज एनी क्वेश्चन और नॉट। रेशियो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, लेवरेज है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है, एंड देन इट इज अ थियरी। सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में नहीं है, सो लेट्स सी केस स्टडी। केस स्टडी इज ऑन वर्किंग कैपिटल। सी, कैन यू सी वर्किंग कैपिटल? सो केस स्टडी में वर्किंग कैपिटल पूछा है। ओके, सो लेट्स डिस्कस केस स्टडी। Jan 2026 RTP, ठीक है। PPW Limited is mid-size manufacturing company producing household appliance for Indian market। Competition heating up, company's management is becoming increasingly conscious about liquidity management and efficient use of working capital। So over here they are trying to say कि ये working capital chapter पे case study है। So ideally the first paragraphs, the initial paragraphs of case scenarios are more informative, ठीक है। वो शायद सॉल्यूशन के लिए, सॉल्व करने के लिए उतना हेल्प ना करे, दे आर जस्ट इंफॉर्मेटिव इन पर्पस। दे आर ट्राइंग टू गिव यू हिंट कि ये वर्किंग कैपिटल पे क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स company sales was 48 lakhs and company offered a credit of 3 months। So can I say ACP was 3 months?
On the production side, so this was on sales side. Now on the production side, company incurs following expense. Material consumed 12 lakh, supplier is giving 2 months credit. Wages पूरे साल का 9,60,000 है. 1 month lag means 1 month outstanding. Cash manufacturing expense 12 lakh settled 1 month in arrears means again 1 month outstanding. A cash manufacturing expense, क्या इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा या नहीं होगा? क्या कैश मैन्युफैक्चरिंग है? सो कैन आई से नॉन कैश expense in the form of depreciation would not have been included here. Correct? Administrative दिया है and selling expense दिया है. Company sells its product on a GP margin of 20%. It also maintains 2 months stock of raw material and 2 months stock of FG. So can I say this is RM holding period, FG holding period? Further, depreciation is considered part of cost of production, but since it does not require cash outflow, management wants to ignore it. ठीक है? And calculate cash cost basis of working capital. A minimum cash balance is 1 lakh, which will always be retained for contingencies. Now the board of directors has asked the finance team to answer the following 5 questions. What will be the gross working capital of the company on cash cost basis? एक क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. What is gross working capital? Can I say it is nothing but sum of current assets? Yes or no? Net working capital नहीं बोला है, gross working capital बोला है. ठीक है? So it is nothing but sum of current assets. So if you see the solution, since we have less time, we need to go to the solution. See, if we go to the solution, can I say gross working capital is 18,30,000? ये 18,30,000 आया कैसे है? It is nothing but sum of all current assets. अच्छा, raw material stock कैसे फाइंड किया? तो raw material is based on raw material consumption. How to calculate RM inventory? RM stock, it is nothing but raw material consumption into raw material holding period divided by 12. Yes or no? So material consumption was, sorry, it is 12 lakh given in the question. Yes or no? And raw material holding period is over here, 2 months stock. Are you following? So RM is 12 lakh into 2 by 12. 2 lakh is my RM stock. वैसे finished goods is based on COGS. Yes or no? तो COGS कैसे आया होगा? COGS में 12 लाख मटीरियल प्लस वेजेस 9,60,000. सो 12 लाख प्लस वेजेस 9,60,000 एंड प्लस कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3 lakh, sorry 12 lakh. So 12 plus 12, 24, 33,60,000 is my COGS. Yes or no? So FG stock की फॉर्मूला क्या बनेगी? COGS into FG holding period divided by 12. COGS comes to 33.6 lakh into 2 months is my FG stock divided by 12. Raw material consumption was 12 lakh into 2 by 12. Correct? So let's see. 3360. फिर आएगा डेटर्स. बोलो डेटर्स. यहाँ पे they have specifically said that follow cash cost basis. तो डेटर्स हम सेल्स पे लेंगे कि कैश कॉस्ट सेल्स पे लेंगे? Tell me. What do you think? They have directly said कि follow cash cost basis. So can I say debtors will not be valued on sales? Debtors be valued on cost of sales. Are you following? So if cost of sales कैसे calculate करते हैं? Cost of sales is nothing but, can I say हम COGS लिखते थे, फिर admin ऐड करते थे, selling expense ऐड करते थे, and we used to get cost of sales. So COGS is 3360. Admin given in the question is how much?
360 and selling is 120. Selling is 120. So हमारा cost of sales comes to 3360 plus 360 plus 120. 38 lakh 40,000. So debtors will be valued on 38 lakh 40,000. Are you following everyone? So let's see debtors. And debtors को हम कितनी क्रेडिट देते हैं? 3 months की क्रेडिट. So can you see debtors is valued on cost of sales. 3840 into 3 divide by 12. फिर करंट असेट में अगर आप ध्यान से देखो तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस 1 month in advance. तो कहना है से प्रीपेड एक्सपेंस हुआ. So 120 into 1/12 will be my prepaid sales promotion expense. Cash balance is already given 1 lakh. So my gross working capital comes to 18 lakh 30,000. Clear everyone? Point number 1. Gross working capital means sum of current assets. Point number 2. Company wants to compute its working capital requirement, ठीक है, on cash cost basis assuming a 15% margin. क्या बोला है? On cash cost basis assuming a 15% margin. A margin means margin of safety. हाँ. सो कह रहे हैं अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे करंट लायबिलिटीज माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे एक्चुअल वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है वो पता चलेगा. एंड देन आई विल ऐड 15% मार्जिन. ठीक है. सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कम्स टू 18,30,000. उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएगा एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा. ठीक है. सो क्रेडिटर से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे 12 लाख का एंड क्रेडिट गिवन बाय सप्लायर इज ओवर ईयर 2 months. सो 12 lakh परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू 2/12. Why you want to deduct depreciation? They have directly said that this is cash manufacturing expense. तो depreciation क्यों माइनस कर रहे हैं? ऑलरेडी डिडक्टेड है इसमें. So you are, Asta, what you are trying to do, you are trying to unnecessary complicate things. You are not trying to keep simple as it is. Are you following? आप थोड़ा ज्यादा सोच के और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपने आप. So don't do that. They have said that manufacturing expense cash है. तो where is the point of depreciation over there? सो क्रेडिटर्स माइनस किया. फिर वेजेस आर आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month, सो 960 into 1/12. फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 12 lakh into 1/12 will be outstanding. Administration expense 360 1/12. So that will be subtracted from current assets and we will get net working capital CA upon excess over of current asset over current liability. 15% मार्जिन ऐड कर दिया एंड वी विल गेट आवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 2 इज टोटल वर्किंग कैपिटल नीडेड आफ्टर एडिंग मार्जिन ऑफ 15%. यस, इफ टोटल बेसिस है एंड डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो डेप्रिसिएशन पे देयर वुड नॉट बी एनी लैग बिकॉज डेप्रिसिएशन का पेमेंट नहीं होता है. तो व्हाट आउटस्टैंडिंग व्हाट प्रीपेड, इन दैट केस इट इज करेक्ट. बट हियर इट इज कैश मैन्युफैक्चरिंग, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डेप्रिसिएशन in this question. So understood point number 2, working capital needed after adding 15% margin. Excluding 15% margin, what is the current ratio? ए रेशियोज चैप्टर याद करो. रेशियोज चैप्टर करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या थी? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज. सो मेरे करंट असेट है 18,30,000, टोटल करंट लायबिलिटीज 4,10,000. तो कहना है से माय करंट रेशियो वुड बी 18,30,000 divided by 4,10,000. 4.4634. Are you following? 4.46. Clear? Simple current ratio.
फोर्थ, कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो की फॉर्मूला क्या थी? करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, यस और नो? करंट असेट माइनस स्टॉक minus prepaid expense divide by current liability. My total current asset is 18.3 lakh. Stock की वैल्यू कितनी है? Stock FG stock was 2 lakh and sorry, RM stock was 2 lakh. FG stock is 5 lakh 60. So 2 lakh minus 5.6 lakh. Prepaid expense था selling prepaid. Prepaid expense was 10,000. ठीक है, so minus 10,000 which is nothing but 0.1 lakh divide by current liabilities 4.10 lakh. ठीक है, so 18 लाख में से 2 लाख का आरएम स्टॉक निकल जाएगा, 5 लाख 60 का एफजी निकल जाएगा, 10,000 का प्रीपेड निकल जाएगा एंड डिवाइड बाय 4 लाख 10, 2.5121. दिस इज माय क्विक रेशियो, 2.51. ठीक है, अराउंड 2.51. सो कैन यू सी 1830 में से, अच्छा मैंने 18 लाख की मैंने कैलकुलेशन में 18 लाख लिया, बट आपको 1830 लेना है. ठीक है, सो 1830 माइनस 2 माइनस 560 माइनस 10 डिवाइड बाय 410, सो 2.59. लास्ट क्या पूछा है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. So if you closely see this case study is mixture of ratios chapter and working capital chapter. ठीक है, first 2 points were on working capital, 3, 4, 5 is on ratios. So working capital turnover ratio formula क्या है? Sales upon working capital, yes or no? This is the formula to calculate working capital turnover ratio. ठीक है, नाउ यहाँ पे सेल्स का वैल्यू इज 48 lakhs, but can I say there we are asked to calculate working capital turnover ratio based on cost of sales. Can you read this question carefully? सेल्स होता तो 48 लाख लेते हैं, but they have specifically said calculate working capital turnover ratio based on cost of sales. So can I say यहाँ पे sales नहीं आएगा, cost of sales आएगा divide by working capital. Are you following, students? So cost of sales was 38 lakh 40,000 and our excess of current assets over current liability, that is excluding margin, was 14 lakh 20,000. Understood? Yes, ideally it is sales upon working capital. Correct, Kuldeep. But यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफिक बोला है ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हम क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करेंगे. We will just follow what is given in the or what is asked in the question. ठीक है, so simple था case study. So I hope this revisionary session on working capital management added some value in your financial management life. You are able to brush up the concepts, आप recollect कर पा रहे थे. So I hope it added some value. So thank you, students. The time is Sir, up. हाँ बोलो. sir, there is a question given in study mat. Sir, 2 साल given है, year 1 and year 2. Year 1 में सर प्रोडक्शन 6,000 है, सेल्स 5,000 है, 1,000 क्लोजिंग था, एंड हाँ ईयर 2 में 9,000 की प्रोडक्शन किया एंड 8,500 की सेल्स हुई. हाँ तो नेट तो 1,500 हमारा क्लोजिंग बच गया. हाँ सर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स में हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, सर उसमें इन्होंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग ऐड करके फिर जो वैल्यू निकली उसके हाँ ऊपर एवरेज. क्लोजिंग स्टॉक का किया हाँ है. एवरेज बेस पे लिया. दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन कॉस्टिंग एज वेल. ओपनिंग ओपनिंग जो स्टॉक है उसकी कुछ वैल्यू होगी, यस प्लस सर, जो ईयर 1 की है. हाँ प्लस ड्यूरिंग द ईयर जो नए यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी कोई कुछ वैल्यू होगी. सो दोनों की कुछ एवरेज वैल्यू निकलेगी. सो दैट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ऑन वेटेड एवरेज मेथड. सर सो हम दो नॉर्मली मेथड है ना. करते हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं सिर्फ. हाँ
सर नॉर्मली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही करते हैं, ओपनिंग को ऐड नहीं ऐसा नहीं करते है। हैं। आप इन्वेंट्री AS2 भी याद करो। AS2 में जो क्लोजिंग स्टॉक होता था, इट कैन बी वैल्यूड यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, इट कैन बी वैल्यूड यूजिंग फीफो मेथड। ओके ठीक है, सर। इट इज नॉट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस वो तो लेटेस्ट बैच हुआ, क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा है। सो इफ यू आर वैल्यूइंग ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस यू आर यूजिंग फीफो मेथड। जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो लेटेस्ट प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उस पे हम वैल्यू कर रहे हैं, सो दैट इज फीफो मेथड। बट साइमल्टेनियसली देयर इज वेटेड एवरेज मेथड एज वेल ना। सो यहाँ पे सोल्यूशन में दे हैव फॉलोड वेटेड एवरेज मेथड टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। ओके सर। सर आरटीपी थी सितंबर 2025 की, उसमें नेट प्रॉफिट में नेगेटिव आया था, लेकिन उन्होंने टैक्स फिर भी लिया हुआ है और टैक्स सेविंग करके बताया हुआ है। हाँ, सो या उसमें ऐसा बोला होगा कि टैक्स इज द प्रॉफिट इज नॉट सेट ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर। सर ऐसा कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट उन्होंने आंसर में वैसे ही किया हुआ है। हाँ, तो वैसा अज्यूम किया होगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू टेक टीम, आई एम एंडिंग द सेशन। या